नहीं बनता lamb-driven. the Hyderabadi Muslim food. But please understand that Hyderabadi food is also the Telugu food, which is very, very, inherent part of Hyderabad. So the idlis and the dosas are as much, the rasams and all are as much a part of our cuisine as the chigur gosh. अगर chigur gosh यहाँ है तो Ambade ka gosh, which they call gongura mutton, is on their side. Gongura mamasam and all that. The royalus, the prawns are very much. So it's a true Ganga Jamni tehzeeb when it comes to even the food. This place, its people, the old, the new, the archaeological greatness, the modern snarling concrete labyrinth, everything is enveloped inside roughly 650 square kilometers of earth. It has slowly become my favorite place. Yes, it's devoid of any beaches or bohemian culture, but then they've got biryani. Yes, that slow-cooked meaty plate of rice, which here, as they say, has to be served grand. After all, the city is known more by its various restaurants that parcel biryani to some of the bigger metropolis. First up agenda in Hyderabad was to meet Ilahi Hiptullah, the well-known Hyderabadi actress, and I was meeting her at possibly the best cultural space in the city, Lama Khan, which she along with two of her close relatives, Farhan Humaira and Biju Matthews from New York, have been nurturing since half a decade. Also which has been transformed from a house to an extensive library, a performing arts center, and also has a tiny kitchen with a great heart. So Lama Khan, as you know, is this place in Banjara Hills. It's a house. It was a home of one of our uncles called Hassan Mamu. Actually, my Mubola Bhai Farhan, unke Mamu the. And he was a very avid photographer and a very renowned photographer of Hyderabad. He was a bachelor and he was an amazing cook. तो घर तो अड्डा था बिल्कुल, मतलब पूरे लोग यहाँ पे रहते थे, मामू खाना पकाते थे, सब कुछ देते थे. एंड मामू अनफॉर्चुनेटली पास्ट अवे प्रीटी यंग, एंड व्हेन ही डिड ही bequeathed the home to Farhan and said कि देखो अगर है ना है रहो, but try not to make money out of it, give it back to society. So it took us about 2 or 3 years to form a trust. And Lama Khan is an open cultural space. We don't charge the performers to perform, we don't charge the audience to watch. It runs only on donations. We have a self-sustaining canteen. और वो कैंटीन में बिल्कुल हैदराबादी चीज़ें मिलती है, लाइक ईरानी चाय, समोसे, एंड वी हैव अ मील एंड यू कैन गेट एन एंटायर मील, लंच और डिनर अंडर 100 रुपीज़. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग द मील मेन्यू, आई एम टॉकिंग खट्टी दाल चावल, लौकी माँ खिचड़ी और अंडे तले हुए, वी हैव. एंड दैट वाज एक्चुअली अ प्लॉय बिकॉज फरहान्स चालूनेस वेरी सेट कि अगर अंडे तलने की बू आई तो कोई भी हंगर जगती, तो इट्स अ गुड थिंग टू हैव फ्रेशली मेड एग्स ऑल द टाइम. तो अंडे मिलते, सैंडविचेस मिलते, बट एनीथिंग दैट यू कैन, इट्स अ होल सस्टेनेबल मील फॉर 100 रुपीज़. तो हाँ, शामी शिकम पूरी, शामी कबाब, वो सब, मतलब एवरीथिंग इज देयर. Having tried their khatti dal, keema khichdi, chicken curry and roti for lunch, it remains as my personal favorite and one of the most memorable meal from this trip. But the best part about Lama Khan, when I say an open cultural spaces, this space is completely without any kind of क्या कहना चाहिए, pressure. So you can come and hang out all day long. You don't have to eat anything. You don't have to do anything. These were the spaces that we grew up in when we were in our college days, where we had spaces which were open, which were like, let's say, an Allianz or a Max Muller Bhavan, where we all got together, thought of changing the world. We knew that we could make a difference to this world. And today the youth unfortunately goes to places like Starbucks and Cafe Coffee Day and eats muffins and watches Bollywood songs. But the thing is, we are responsible. We've taken those spaces away from them, right? कहाँ पे है जगह के आप ऐसी मिलो, बैठो, बिल्कुल मंतखा मारो, इसकी कोई प्रेशर नहीं है कि जितनी देर बैठो, बैठना चाहे बैठो. We've taken those spaces away from them. So we've kind of brought Lama Khan with the hope that we can renew the youthfulness of the youth.
I had a lot of preconceived notion about this city. That's all about some great food and quality Irani chai. And I'm glad it turned out to be just that way. After almost 10 different biryanis, it's safe to conclude that this place, Cafe Bahar in Bashirbagh, was the most memorable rice affair. Sarvi at Banjara Hill serves one of Hyderabad's oldest dish, Patthar Ka Gosh, lamb meat slow cooked over a stone heated by charcoal. Also, while you're grabbing a cup of perfect creamy Irani chai and Usmania biscuits for breakfast, look for this, Keema Lukmi, deep fried puff pastry filled with minced meat. And spotted at every 100 meters in the old city are such naan shops that have been feeding the locals the square, buttoned-hole, slightly salty tasting bread since over a few decades. The Masab Tank area is one melting pot with the old and new cross path, and where you'll find half a dozen popular restaurants like Dine Hill, serving kapsa, laham mandi, and beautiful, slowly rolling, sweating off its skin, moderately marinated grilled chicken. And if antiquities from the Nizami era interests you, then you should visit Mughal Arts, run by the Beg brothers, Mirza Azhar and Mirza Mustafa, who sell and rent rare collectibles and also deal with some exquisite chandeliers and vinyl players that you can now only spot in the movies from the golden age. रजा मुरा सब ग्रामोफोन सुना तो ये कहाँ से कलेक्शन लाया तो सब हैदराबाद के ओल्ड नवाब फैमिलीज का कलेक्शन था वेरी गुड बहुत कलेक्शन अच्छा था वो मलिनों में हम लोग मासल करें बड़े बड़े मलिनों बहुत सामान और ये इस तरह की आपकी एक ही दुकान है यहाँ पर है मासब टैंक तो बंजारे पे आने वाली फर्स्ट मेरी दुकान है जिसका नाम मुगल आर्ट्स है मेरे वालिद साहब जो फर्स्ट आए थे 35 इयर्स ओल्ड शॉप है मेरी जी हाँ सेल करते हैं पुराने अबाउट 70 इयर्स 80 इयर्स ओल्ड कम से कम 70-80 इयर्स ओल्ड रहते हैं जो हैदराबाद ओल्ड जो नवाब फैमिली के घरों से आते हैं हम लोग लेते हैं बाज़ लोग कमीशन बेसिस पे हमारे पास ला के रखाते हैं हम लोग सेल करके कमीशन लेते हैं उनसे जी हाँ तो ये नहीं अगर कोई चीज़ आपके पास आती है तो कितना टाइम लगता है उसको फिर से टाइम का तो ये नहीं रहता साहब ये तो शौकीन रहते पहले नहीं था अब तो हैदराबाद के लोगों में भी शऊर पैदा होगा सामान कलेक्ट करने का पहले बाहर के कंट्रियों से लोग आते थे अब हैदराबाद के लोग भी जो है आके परचेस कर रहे हैं सामान तो लोगों को भी शौक हो गया पुराना फर्नीचर है कॉइन्स है स्टैम्प्स है पुराने ओल्ड फोटोज़ है वॉल क्लॉक है फर्नीचर वगैरह है पुराने लंतर हंडी है टेलीफोन्स है ग्रामाफोन्स है पुराने ओल्ड कैमरे वगैरह तो इसके लिए आपके अलग अलग कारीगर है या ये नहीं अलग अलग कारीगर रहते हैं जो कारीगर भी 70-80 इयर्स ओल्ड है वो लोग ही करते हैं जो पुराने जो कारीगर हैं ऑलरेडी जो हमारे फादर करते थे फादर के बाद हम लोग कर रहे हैं ये बिजनेस जी सेकंड जनरेशन first thing that they mention to you is biryani, okay, or halim or paya or nihari or something like that, right? But of course, that's a commercially viable food, you know, that's shown to the rest of the world or something. What goes on in a Hyderabadi kitchen, a typical Hyderabadi kitchen? So, you know, Hyderabadi food, yes, so for the biryani halim se you'll always showcase, you put your best foot forward. तो अब बिरयानी तो शादियों में पकती तो अब शादी का खाना लोगों को खिलाएंगे ना वेरी रेयरली यू कॉल पीपल होम एंड गिव देम दाल चावल राइट अब मेहमान भी घर को आए तो यू विल मेक दैट एफर्ट एंड मेक कोफ्ते की बिरयानी और कुछ तो भी ज़रा ज़्यादा करेंगे सो दैट द सेम वे इट्स नोन फॉर थिंग्स दैट वी वांट द वर्ल्ड टू नो अस बाय लाइक यू नो बट व्हाट पीपल डोंट रियली रियलाइज समटाइम्स इज हैदराबादी रोज़ाना खाना एज आई कॉल इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स बहुत मसाले भुने जाते बहुत पीसे जाते बहुत चीज़ें रहते फॉर एग्जाम्पल Jaws, which is nutmeg, is a commonly found spice in a Hyderabadi kitchen, which is not a commonly found spice anywhere. How? Nutmeg, जिसको हम jaws बुलाते हैं. You know, so of course you'll have the badi sauf and the phool, which you know, also biryani you get the potli का मसाला, वो सब रहता. But that's for biryani. मगर रोज लोग nutmeg उनके खानों में डालते. Shamis are a everyday food thing.
मगर शामी में जो मसाला पिस्ता गोश्त के साथ देर इज़ कोथमीर, देर इज़ हरा मसाला, देर इज़ दही, देर इज़ बादाम, देर इज़ चिलगोज़े, यू नो चने की दाल. तो इट्स कॉम्प्लेक्स. यही नहीं है कि कुछ करके बना दे रहे हैं. खट्टी दाल भी लो, दाल है उसके अंदर और खट्टा हमारा टमाटे से नहीं आता, खट्टा हमारा इमली से आता. सो वी हैव अ लॉट ऑफ इमली. और हमारा खाना बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ एलिमेंट ऑफ खटास इन खाना. हर चीज़ में आप बैगन ले लो या आप यू नो दाल ले लो या आप चिगुर लो. लाइक द चिगुर, द फर्स्ट लीफ ऑफ द इमली. जब इमली का झाड़ पहले स्प्रिंग में जो छोटे आते हैं उसको चिगुर बोलते हैं, चिगुर की भाजी. तो चिगुर गोश्त बहुत बनता है हमारे पास. चिगुर गोश्त, हाँ, हमारे हर चीज़ गोश्त से ही बनते हैं. वेजिटेरियन के लिए ज़रा बहुत वी आर लाइक क्या आई डोंट इवन नो एनी गुड वेजिटेरियन डिश. खड़ी दाल में भी दाल ही रहते वेजिटेबल, अदरवाइज वी डोंट हैव मच वेजिटेरियन. अकम्पनीमेंट ऑफ गोश्त इज वेजिटेबल. भैया मजहब के पिंजरे को तोड़, मोहब्बत की गोद में खेलता ये हसीन शहर पुकार रहा है. मोतियों से जड़ा, मीनारों पे खड़ा, ये निजामों का शहर पुकार रहा है. See, with the programming of Lamakan, we don't try to control the kind of stuff that comes in terms of quality or whatever. That filter we don't have, but we do lean a little towards the left. Those are our politics, and the space is a little skewered towards the left. But having said that, when there was Nathuram Godse stage here, there was a lot of talk that went around between the 4 trustees saying, should we allow it to be staged? And the common consensus was that you can't not take anything. Let the audience reject it, right? So like when the Telangana state ka movement chal raha tha for the breaking of the state, Lamakan was a very important part. We made sure that a lot of Telugu programming was done, not in terms of influencing, but in terms of providing a platform where people understood what it was all about. You could then make up your mind whether you wanted Telangana or didn't want Telangana. When the Rohit Vemula's suicide happened, I mean, हमारे गली में हुआ. I mean, he's University of Hyderabad boy, and then we actually cleared programming to give Lamakan, keep it free for any kind of Rohit Vemula programming that would happen here. Rohit's mother, we engaged with, brought her out. She addressed people here. We made her very comfortable and sure that we will not blow it out of proportion in terms of using her as another device to gain any kind of mileage or whatever. But made her, the first time she ever spoke to people was from Lamakan, and we're very proud to say that we are open in terms where people find us accessible, people find us approachable, and we are there. It's a platform that you can absolutely make use of, and it's literally this is mini Hyderabad. भाई आप नीचे जाओ, क्लासिकल म्यूजिक चल रहा, बाजू में वहाँ पे द रामायण स्टोरी इज बीइंग टोल्ड, ऊपर चाय समोसे क्विज हो रहा, ऊपर जाओ देयर रिहर्सल्स ऑफ बर्ड वॉचिंग और समथिंग. सो इट इज अ मिनी हैदराबाद, एंड द क्विजीन इज ऑथेंटिक, द पीपल आर ऑथेंटिक, आई होप, and the events that go on dil se hai. There's nothing pretentious about this, because we didn't want Lamakan to be a place of being seen at. It's like Lamakan gaye jayenge, it wasn't that, because wo kya hota, wo value chale jati thode dinon mein, another new place will come, and loyalists will remain loyal only for that long. They have to be owners, they have to have ownership towards this place, and I'm hoping we have created that culture.